अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू सभी मदी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे मोस्ट फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं, तैमूर रिजवान फ्रॉम कतर वंस अगेन। तैमूर, गुड टू सी यू, गुड टू हैव यू वंस अगेन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा हीरो? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह यार, रमजान चल रहा है इधर। ऑलमोस्ट 1/5 ओवर है। माशाल्लाह, चेहरा खिल रहा है तुम्हारा आज, मतलब चमक रहा है, रौनक आई हुई है मस्ट बी चेहरे द मस्ट बी द न्यू मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सही सही सही। और सुनाओ यार, व्हाट्सअप कैसा चल रहा है कतर में, लॉकडाउन और क्या हालात हैं? यार, इट्स वेरी क्वाइट। आई एम सरप्राइज पीपल आर बिहेविंग सो इंसानों की तरह रह रहे हैं सो फार। बट आई हैव हाई होप्स कि इंशाल्लाह जल्द खत्म होगा, सो सो दैट वी आर एबल टू गो बैक टू लाइफ एज नॉर्मल। तो मैं देख रहा था कतर में भी काफी केसेस ज्यादा हो गए हैं, 13-14 हजार तक थे कल परसों तक। Yes, that's Qatar is a small population, by the way. So just for the viewers, Qatar is a country in the Middle East, right next to Dubai and Saudi Arabia. It borders Saudi Arabia, and its population is 3 million. 3 million, 30 lakh total, 30 lakh. You compare that to Pakistan. Pakistan की तकरीबन 30 करोड़ 25 करोड़ आबादी है, right? 22 करोड़। 22 करोड़ आबादी है, right? अब वो भी मैं कहता हूँ कि यार वो इवन कतर की इवन लेस देन लाहौर है, लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी है और पूरे कतर की 30 लाख। इमेजिन, राइट? तो उसमें 12,000 13,000 केस होना इज अ सीरियस थिंग, लेकिन आई थिंक इट्स बिकॉज दे आर टेस्टिंग अ लॉट। फॉर एग्जांपल, दुबई इज आल्सो स्मॉल कंट्री, बट दुबई के अंदर 1.3 मिलियन टेस्ट किए उन्होंने। 1.3 मिलियन टेस्ट, कैन यू इमेजिन? इतने यूएस में किए होंगे, राइट? इतने टोटल पूरे यूएस में किए जो कि सिर्फ दुबई में करते हैं। सो दे आर बीइंग वेरी वेरी कॉशियस हियर। आई एम ग्लैड। एक इशू जो इसमें आता है, बिकॉज इट्स रमदान, तरावी नहीं है मस्जिद में, सो थोड़े से हम गुमराह हो रहे हैं कि भाई क्या करें, व्हाट हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ रमदान। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे एज वेल। हाँ यार, आज हम तैमूर हमें बताएंगे कि हाउ टू स्पेंड दिस रमजान प्रोडक्टिवली और किस तरह हम इस रमजान को गुजार सकते हैं। तो ओवर टू यू तैमूर, बताओ इसमें क्या तुम्हारे ख्याल में हमें इस रमजान में करना चाहिए। ओके, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I think so. Ramadan is 1/5 over, right? And I recall someone was comparing, not directly comparing, but it's like, do you know White Friday and Cyber Monday and Black Friday and Cyber Monday? That's right. Yeah, Yeah. those weekends where people go crazy over the deals and they're fighting each Yes, other. yes. Yeah. Ramadan is that time of the year for Muslims. It's when sawab has been given freely. It's like price tags are off, like it's unlimited. Everything is 100% off. Shaitan band hai, you know, ek farz ka. Okay, so there's something in Arabic. I don't know if you've heard of this before, but in Ramadan, एक फर्द का जो सवाब है ना, वो 70 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो दिस इज, सो जस्ट टू क्लैरिफाई, इन अरबिक ये जो फ्रेज है 70 टाइम्स ज़्यादा होना, दैट्स एन अप्रॉक्सीमेशन। इट्स बेसिकली मीन्स सैकड़ों। लाइक हम उर्दू में बोलते हैं सैकड़ों दफ़ा। इट डजंट मीन 70, लाइक टाइम लोग कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं, अच्छा जी वो 4 फर्ज पढ़ लिए मल्टीप्लाइड बाय 70, अच्छा जी मैंने 280 पढ़ लिया। इट एक्चुअली मीन्स समथिंग बेटर। इट मीन्स के उससे भी ज़्यादा आपका काउंट होता है, राइट? सो हाँ। so it's that time of the year basically. It's 1/5 over. I think people every year people fail to realize what a big blessing this month is, including me first of all, right? um, for example, like one of the blessings of Ramadan is that isme to Quran utra, right? And we hear these things and we're like, yaar, we've heard this all our lives. Like, and what that means is you have a moral code, the Quran, which was revealed to you, right? And it's a unique moral code. I'll give you a small example. In the US, what are they fighting about? You must hear about these gay pride parades and the LGBT issues that pop up and laws, and they're fighting all the time about things. It's because they don't have one moral code to stick to. They don't have this guidebook to life where it says, hey, do this, do this, do this, do this, and you're set, right? Just it's like the US is trying to deconstruct
society without an instruction manual, like वो स्क्रू ड्राइवर के साथ लगे हुए हैं, अच्छा जी ये स्क्रू इधर लगा के देख रहे हैं कभी उधर, but we have this edge, and I know that we कि like हमारे to. पास एक बुक है, कोई भी मसला, कोई भी चीज, वी कैन रेफर टू इट, वी कैन ओपन इट, और हम उसमें हर दुनिया का हर मसले के बारे में उसमें बात की, which Yeah, is the Quran. and then really, the thing is that society is way more complex than, for example, basic rules like भाई अच्छा जी सोना कितने बजे उठना कितने बजे, उसके society is a very complex. I don't know if the audience, if someone is studies sociology, but how to govern life, like Socrates के ज़माने से ना, the philosophers have been like, what is the purpose of life and how to live life. खैर, तो कुरान इस महीने में उतरा, right? That's the big fazilat. But maybe you won't be able to picture it, right? Visualize कि इसका exactly मतलब क्या है. Without that, without this month, we would be still living in the dark ages. Can you imagine living in the dark ages, marrying? So क्या करते थे? What would the Arabs do before Islam? They would bury their daughters alive. They would marry their sisters, mothers, fathers. You can imagine all sort of sick stuff. जो कि कुरान ने हमें इससे छुड़वाया. Okay, so that's the biggest blessing. रोजे के बारे में, I don't know if many people realize this, but there's a hadith which says that the person who fasts one day, कितने? One, for the sake of Allah, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है, उसका इतना अजर है कि अल्लाह उसके और जहन्नम के बीच में एक अनलिमिटेड डिस्टेंस रख देंगे, एज इन ही विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम जहन्नम विद दैट अनलिमिटेड डिस्टेंस. जो हदीस में आता है, इट्स कॉल्ड 70 गढ़ों या 70 ट्रेंचेस का फासला है. अगेन इन अरबिक 70 मीन्स सैकड़ों. सो एक दिन का वो है जरा, राइट? But this, of course, this means fasting on Allah's terms, not in our terms. कि यार अच्छा boy intermittent fasting है, ठीक है, हम जो है ना ज़रा हमारी जो है ना साथ साथ कीटो डाइट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, थोड़े सिक्स पैक्स भी बन जाएंगे हैं. ये नियत नहीं, नियत अल्लाह वाली, रूल्स अल्लाह वाले, ठीक है, हमारे रूल्स नहीं. एक दिन, तो दिस इज 30 days. I would I'm willing to estimate कि हम में से, मैं foremost, मैं पूरे साल के अंदर 30 रोजे रमजान के एक रोजा भी नहीं शायद रखता मैं पूरे साल में, अपार्ट फ्रॉम रमजान, राइट? सो दिस इज द ब्लैंक चेक. दिस इज बेसिकली, हमें एक चेक बुक मिली है, उसके अंदर ना सारे ब्लैंक चेक्स हैं भाई, 30 ब्लैंक चेक्स हैं. ओके जी, जहन्नम से कितना दूर होना है बताओ? इतना इतना इतना, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज द फजीलत ऑफ दिस मंथ, राइट? कि ये हमें blank checks मिले हैं, for example. Okay, another hadith on Ramadan is, so this is a hadith I'm reading here. This is from Bukhari. He who fasts Ramadan, someone who's fast Ramadan and he has faith and he hopes for a reward from Allah, and उसको पता है उसके रोज़ों में उसने चिड़ी रोज़े नहीं रखे, उसने छुप छुप के पानी नहीं पिया वज़ू के अंदर, उसने जो है गाने नहीं सुने, उसने गिबत नहीं की, उसके सारे पिछले गुनाह माफ होते हैं in Ramadan. And yeah, this is also something अच्छा, वो हमें. he is like a newborn baby, उसके सारे रमजान सारे गुनाह माफ हो जाते हैं. Exactly. उम्र और हज की हम इतनी इज्जत क्यों करते हैं भाई? हम सारी उम्र गुनाह लेके जाते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमने सही नीयत से उम्र और हज किया तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर देंगे, राइट? इमेजिन दिस इज द सेम ऑफर, बट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. अब घर बैठ के यार सिर्फ इंसानों की तरह एक रोजे रख लो, गाने ना सुनो, बुरी बातें ना करो, मूवीज के साथ टाइम स्पेंड ना करो, अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लो, तो यार तुम्हारे सारे गुनाह, उम्र और हज का टिकट भी तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा, तुम्हें वीजा नहीं लगवाना पड़ेगा और तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज समथिंग ऑन द फजीलत फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर हम ये रियलाइज कर लेंगे, ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट डू वी डू इन दिस मंथ that 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 stops us from making the most of it? What do we do wrong? Like, what are we getting wrong so far? So I think there's one thing that I've always looked at is that humans predominantly start worshipping the culture instead of religion, instead of their God. Why? Okay. A few years ago, billboards के ऊपर हम देखते थे, for example, the models would be, let's take an example, एक खास किस्म की ना, they would cover themselves in a certain way in a few years. This is 10-15 years ago. Slowly and slowly वो दुपट्टे से sleeveless से अब crop tops पे आ गया, for example, and people are starting to do that as well. Now
The issue is, okay, if you're thinking about your morality and not just blindly following whatever that's on the billboard, then okay, I will respect you and people will respect you still. But ये एक issue रमज़ान के साथ हमने बना लिया है. The same example of Ramadan is, okay, we fast, we stop eating food and drink, right? हम नहीं खाते पीते, but उसके अलावा हम कुछ नहीं करते. What do we do? नहीं, so we stop there because that's what everyone else is doing, right? और यार उससे ज्यादा करेंगे तो हम तो दीनी हो जाएंगे यार, हम मौलवी मुल्ले नहीं है. And that's what we tell ourselves, right? And that's very true. Like we tell ourselves that, and that stops us from potentially getting all our sins forgiven. Acha, there's one thing that I want to talk to you about, but it's worth going down the road for 30 seconds and we'll come back here. ठीक है? अच्छा, इस बात का क्या मतलब है कि यार लोग कहते हैं "ओ यार नमाजी हो गए हो, ओ मौलवी बन गए हो तुम." What does this mean? यार okay. मौलवी So मतलब नमाजी बनना है, what do you, क्या मतलब नमाजी हो गए हो, मौलवी हो गए हो, क्या मतलब? yeah, so it's like this, right? I always take the example of religion with, for example, university, because it's what a lot of people identify with. Most of us maybe went to university, right? So in university, imagine that you enroll for your courses, you sign up, you register for all the courses that you wanted in a semester, and you come home and you tell your friends, or you call your friends, boy, मुझे सारे courses मिल गए हैं जो मुझे चाहिए थे, right? And imagine they start making fun of you. ओए nerd है यार, तू कितना बड़ा, तू courses में register करता है, ha ha ha. Like, देख अपनी शक्ल है, तू courses में register करता है, right? So imagine that happen. That never happens because everyone kind of assumes कि यार यूनिवर्सिटी ज़रा सीरियस बिजनेस है, ठीक है, अपना हम शुगल मेला लगाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में ना, that's something, it's good thing यार, छा गया यार, है मदी तूने कोर्सेज ले लिए. दीन के अंदर हम ना जरा सा इसका शिकार हो जाते हैं. दीन के अंदर ना, एक बंदा अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, जैसे 3 वक्त की भी पढ़ रहा है, 3 वक्त की, उसका लोग उसके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे यार तू जरा सा, मुझे लगता है तू हमसे दोस्ती तेरी जरा ना ऑफ सीन हो रहा है, तू जरा साइड पे लग रहा है अब, है. हालांकि आप ये सोचो कि 5 नमाज पढ़ना इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. कि ऐसे है कि इट्स नॉट लाइक कि इट्स वो नमाजी हो रहे हो. मैं तो उल्टा उनका मजाक उड़ाता हूँ, यार मैं तो अभी लंगड़ाना शुरू किया, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है. मैं तो वाकई लंगड़ाना शुरू किया है अभी. दिस इज जस्ट द लिम्पिंग पार्ट. आई एम नॉट इवन रनिंग, आई एम नॉट इवन वॉकिंग, राइट? सो 5 वक्त की नमाज पढ़ना इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. इसमें कोई मार्के की वाली बात नहीं, बल्कि अगला मजाक उड़ाओ यार, उसका उसका मजाक उड़ाओ. तू सिर्फ 5 वक्त की नमाज उड़ाता है, पढ़ता है यार, तहज्जुद नहीं पढ़ता तू, फिर मजाक उड़ाओ उसका. या फिर तू कुरान नहीं पढ़ता है, उसका मजाक उड़ाओ. I'm kidding. Don't make fun of him. Motivate him, but don't demotivate him. यार कोई बंदा मुश्किल से है अपना रिहैब पे आया, स्पिरिचुअल रिहैब पे, उसका मजाक ना उड़ाओ. It should not be cool. It's uncool. कहते हैं ना, say no to bullying. Say no to this. This is also bullying. Don't bully someone into कि वो अपना दीन छोड़ दे. क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने आपको पकड़ लिया और टांगों से उल्टा लटका दिया कि हाँ भाई तुमने इस बंदे को क्यों रोका था, तो तुम क्या जवाब दोगे? हैं, तब हंसी नहीं निकलेगी हमारी. इस्तगफुरुल्लाह. खैर. So what we try to do is we just fast, we we starve ourselves, right? And then we keep listening to music because यार देखो दुनिया भी तो साथ चलानी है. That's what we tell ourselves. We watch some movies to pass the time because दुनिया भी तो साथ चलानी है. अल्लाह ताला ने शुगल से तो मना नहीं किया, right? All of these things. Now we have to understand कि यार, why at this point why are you even starving yourself? Because there's a hadith which says if someone fasts for Allah, but he does not stop himself from lies, cheating, stealing, vices, then Allah does not need his hunger, which is very simple. Allah Ta'ala को थोड़ी आपका खाना पहुंच रहा है या आपकी भूख पहुंच रही है. It's fine. Like if you, like it's like this, right? For example, let's say there's a at work, like we're all professionals, right? So let's say there's someone who doesn't wear a suit at work. He doesn't follow the dress code at work. What will his employer think? His employer will think, yeah, this guy is not serious. I don't need your work. Go home. Go home. I don't need you. Right? And that's Allah Ta'ala. This is like something, if you're actually starving yourself, try to avoid music, try to avoid backbiting, you're going to feel good about it. Okay. So some of the things, these are some of the things that people do wrong, right? So like think of it this way. This is one thing that I always very thought provoking for myself is, so eating and drinking, Madi, is it halal or haram generally in life? It's halal, right? Like you need to eat and drink to live, right? To eat and to live.
But just because Allah commanded us, we don't do it for the entire day. So if we're able to stop ourselves from something halal for the entire day because Allah commanded us, why can we not stop ourselves from haram because Allah commands us? It doesn't make sense. So ask yourself, am I just fasting because मेरे घर वाले रोजा रख रहे हैं? And अगर घर वाले रोजा ना रख रहे हो तो शायद मैं भी ना रखता. Or are you keeping it for Allah? Because वो जो offer है ना गुनाह माफ कराने के लिए, वो सिर्फ दूसरे वाले के लिए. Keep it for Allah and try to stay away from stuff, right? So I think now I'll jump to the final portion of my discussion is going to be how. Like how do we do it? Like इस वक्त हम सारे टूटे फूटे इंसान हैं. कैसे पहुंचे यार? कैसे खड़े हुए हैं? देखो सबसे पहली बात, you don't need to run, you don't need to start sprinting, start walking, baby steps लो. तुम अगर एक नमाज नहीं पढ़ते ना रोजे में तो एक नमाज पढ़ लो, बस. एक पढ़ते हो तो दो पढ़ लो, दो पढ़ते हो तो तीन पढ़ लो, तीन पढ़ते हो तो चार पढ़ लो, पांच की पांच पूरी पढ़ते हो ना. और फिर तुम्हें लगता है कि यार देखो मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ और भाई मैं अभी तक औलिया के अंदर मेरा जिक्र क्यों नहीं होता, मुझे अल्लाह ताला ने उठाया क्यों नहीं अपने पास, मैं मेरे ऊपर जो है ना तारी क्यों नहीं हो रहे डिफरेंट. खैर भाई छोड़ दो उसको, तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दो. ठीक है कुरान पढ़ो. एक इंटरेस्टिंग सी बात है ना, I don't know, Quran was always supposed to be the user manual to life, right? I mean, and you will respect yourself so much more if you actually read the user manual for once. Like भाई ये कर ले. To be honest, इस महीने में शैतान बंद है. This is our best shot. इस महीने के अलावा no one's going to do anything, right? I mean, astaghfirullah, I don't say that. I mean के compared to Ramadan, it's going to be nothing. Which is the sad reality for most of us, especially me. So इस महीने के अंदर भाई जब शैतान तुम्हें एक्चुअली नहीं धक्के ठुड्डे मार रहा, तो यार वो किताब उठाओ, वो डस्ट उसके ऊपर से जो अलमारी से ठीक है निकालो, उसके ऊपर जो मिट्टी है ना वो उसको साफ करो, गुलाब से निकालो. ठीक है अपनी बहन और अपनी उनके सर पे सिर्फ शादी के लिए जो हम बचा के रखते हैं कि शादी पे उनके सर पे लगा लेंगे बस खैर होगी, बाकी खैर होगी. उसको एक्चुअली ना छुप के से किसी कोने में जाके ना एक सफ़ा पढ़ लो यार. एक सफ़ा पढ़ने में आई गारंटी ऑल ऑफ अस के हम हैरी पॉटर की नॉवेल्स जो है ना पूरी पूरी नॉवेल्स एक दिन में पढ़ते थे, एक सफ़े में हमें 2-3 मिनट लगे. इट्स अ स्टार्ट. जीरो से इन्फिनिटली ज़्यादा होता है 2 मिनट. स्टार्ट इट एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग. तर्जुमे से पढ़ो. ठीक है एंड इफ कोई ऐसी आयत है जो कि डेंजरस तुम्हें इस तरह से लग रही है कि यू डोंट नो व्हाट इट मींस और यू नॉट श्योर इफ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, ask someone. Literally just ask someone you think who reads the Quran, उससे पूछ लो, पता होगा इंशाल्लाह. खैर the last part is for me is really setting goals. um, Madi, you're a fitness guy, right? You do fitness Yes. and you do martial arts. What happens when you go to your martial arts classes? Does the teacher say कि भाई ये एक progression है, पहले white belt हो गए, फिर I don't know the order, लेकिन white, yellow, blue, something, 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 right? Yeah, You go to exactly. black. ऐसे ही है. Yes. And then there are certain sets of exercise and skills that you learn at and you Each. progress. Yes, exactly. Yes. And अगर मैं तुझे बोलूं यार मती, I'm here with a new revolutionary program. There are no belts anymore. Just do whatever you want. Will you respect me or will you say कि यार I think that's I It will think तुझे sound a bit off, yeah, हाँ, off the track. because this is not just me talking. This is scientific research, sociological research. When you have a goal, when you set goals and you have incremental difficulty levels which increase slowly and slowly, what happens is that you actually stick to the program. The problem with people is in Ramadan they either go all direct black belt का workout करने लग जाएंगे, right? पहले कभी उन्होंने white belt भी नहीं किया and फिर वो थक हार के गिरेंगे एक दिन और उसके बाद कहेंगे अब हमने करीब हाथ भी की नहीं जगह. जाना, हाँ. right? या फिर वो कहेंगे कि हम we're going to just, मैं ना बड़ा केयर फ्री बंदा हूँ, I'm just going to wing it, I'm just going to do whatever I want. And उससे you don't hold yourself accountable. Like it's the same with sleeping at night. अगर मैं ये बोलूँ कि यार मेरा कोई sleep time नहीं, I'll sleep whenever I want, I will never sleep early. And that's tested and tried. मैं इधर धके इसी चीज में खा के I had to come to the conclusion कि भाई you have to set a limit. ये limit है बस जी, इसके बाद सो जाना. तो set a small goal for yourself. Let's say अच्छा it's one तैमूर, sorry to intervene here. मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछना है.
बताओ। रिगार्डिंग रमजान, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ये बात उन्हें जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। दो चीजें हैं यहाँ पे, जैसे होता है अक्सर, रोजा रख लिया, इफ्तारी हो गई, इफ्तारी के बाद वही हरकतें, गालियां दे रहे हैं, गंदी बातें, वो सारा कुछ, फिर कह रहे हो भाई रोजा तो, इफ्तारी हो गई अब रोजा नहीं है। तो तो क्या सिर्फ वही घंटे हैं जिसमें इबादत करनी है, अच्छी बातें करनी है, अपनी जबान पे ताला लगाना है, जबान पे काबू करनी है, उसके बाद जब इफ्तारी हो गई इसके बाद बेशक जो मर्जी करें? One of my teachers said a very thought-provoking thing the other day. He said, once Ramadan is over and you go back to your normal self, which is a less virtuous self, ask yourself, was I worshipping Allah in Ramadan or was I worshipping Ramadan in Ramadan? किसकी इबादत कर रहा था? मैं रमदान की इबादत कर रहा था या फिर मैं अल्लाह की कर रहा था? नो डाउट, अगर आपने रोजे के अंदर अपनी गालियां छोड़ी हैं, अपनी जो भी हरकतें छोड़ी हैं, मैं अपनी बात करूं तो उसका अजर है. But it's like this, right? It's like with a workout, Madeeh. Uh, you when the workout is going on, you're very disciplined. Like when the workout is going on, you watch your weight and everything. As soon as the workout is over, तुम्हारे वो एक महीने का जो जिम की membership थी खत्म हो गई. You go back to eating cheat meals. What happens? All विल the गो बैक effort टू goes to दैट। waste. हाँ, And will you, and ये तू मुझे खुल के बता, you meet someone who does this very often, like every time they do something, they do this. Will you respect them as much as how much you respect someone who sticks to his diet, sticks to his routine? Who will you respect more? द सेकंड वन, द सेकंड सेकंड वन, वन। राइट? और इसीलिए आपके जो दोस्त हैं ना वो आपकी इज्जत इसीलिए करेंगे कि यार तुम इंसान बन गए हो यार इस रमजान में फाइनली, हैं तुमने, यू डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, एंड दिस इज द ओनली मंथ जिसके अंदर बेसिकली सबसे आसान है हमारे लिए छोड़ना. सो इफ वेदर दैट्स एनी एडिक्शन दैट यू हैव, एनी स्मोकिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, गालियों के प्रॉब्लम, इस महीने में नहीं छोड़ोगे ना तो मोस्ट लाइकली बाकी महीनों में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा. आई थिंक एंड दैट आल्सो ब्रिंग्स अस टू अनदर टॉपिक, राइट? एडिक्शन से रिलेटेड एंड दैट विल डिस्कस अनदर पॉडकास्ट। लेकिन एक और सवाल है मेरा यहाँ पे। एक और सवाल वो ये है कि जैसे अब पिछले दिनों मैं अलफत्ते के बाहर खड़ा हुआ था, तो आजकल कोरोना की वजह से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है, तो वो लाइनों में खड़ा करते हैं, कहते हैं सारे एकदम से साथ ना घुसे अंदर। ठीक है. तो लाइनों में उन्होंने खड़ा किया हुआ था बाहर, तो हम्म. अब ड्राइवर लोग थे वो गुस्से में आ गए और गालियां देना शुरू हो गए, और हमें बाहर खड़ा किया हुआ है गर्मी में, रोजा है हमारा, रोजा लग रहा है, और दे जस्ट स्टार्टेड कर्सिंग और वो अंदर घुस गए। और अच्छा ये बताओ, ये कहना कि भाई मेरा रोजा है, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पेशेंस का तो यहाँ पे पाकिस्तान में कोई सीन ही नहीं है, और ये कहना कि भाई मेरा रोजा है तो मेरे से, इसके ऊपर बात करो थोड़ी सी। सो आई हैव अ क्वेश्चन. वी फास्ट फॉर अल्लाह, राइट? ओके, fine. Let's say let's say our father tells us to do something, right? He says कि यार तुम, मुझे पता है तुम्हारा रोजा है लेकिन जाओ ये काम कर लो मेरे लिए, right? एंड उसमें बड़ी तुम्हें दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही, ख्वारी हो रही, खज्जल हो रहे हो तुम, तुम्हें पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तप लग रही है, तुम्हारे अब्बू की कॉल है, यार काम हुआ है अभी तक, तुम उनको गालियां देने लगोगे? Will you curse at him, at your father? No, you will not, because he is listening to you, he can see you. तुम अपने अब्बू के सामने गाली नहीं दोगे. But tell me something, अगर एक there's like kiraman katibin, there's one here, there's one here, right? Which one are you keeping busy? Which one? The one who's They're noting, writing the bad. they're noting down every single thing that you are doing, right? तो रोजा, हाँ गर्मी से तुम्हारा रोजा खराब हो रहा है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, बट गालियों से तो तुम्हारा रोजा खराब हो गया ना, बात ही खत्म हो गई. खाना खा लो जाके थोड़ा, यू you नो know, थोड़ा सा पानी पी खाना लो। खा लो. नहीं, थोड़ा पानी पी लोगे तुम क्या बोलोगे? मेरा रोजा खराब हो गया. तो थोड़ी गालियां दोगे तो तुम्हारा रोजा खराब हो रहा है. ओ भाई, एंड रोजा खराब करना, डू यू नो व्हाट, हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज? ओके, लेट्स some think about a fiqh is, if you break a fast on purpose, let's say you eat something on purpose, you knowing कि इससे मेरा रोजा टूट जाएगा, गलती तो अल्लाह ताला माफ करता है, he is रहमान and rahim. Let's say you eat something, you know what the punishment of that is? You have to fast 60 consecutive days Yes, in a row. after Ramadan is over. 60 consecutive days. And if you, let's say you're Break. on day 34, and day 34 you do the same mistake,
you start 60 all over again. So next time you swear, you use a bad word, you lose your patience, भाई जिसके लिए आप रख रहे हो ना, भाई बहुत सख्त हिसाब, अल्लाह माफ करे इस एंड ऊपर से यार तुम, तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट? if you don't have even enough self control and willpower to go through it. Let's say for example, Madi, there's a you're working on you're doing a workout with your trainer, and your trainer is like, yeah, and you're feeling it's very tough to do this workout, it's a very tough workout. Will you start cursing your trainer and like, यार क्या करवा रहे हो हमसे, ठुड्डे मारो उसको? नहीं, we will not, we won't, because थोड़ी विल पावर होनी कि चाहिए. हमारी हमें ही फायदा होगा इससे, हमारी बॉडी अच्छी होगी, ज्यादा रैप्स ज्यादा हमें ही फायदा होगा इससे. Exactly. चलो तैमूर, बहुत जबरदस्त बातें की तुमने. टाइम, पॉडकास्ट का टाइम बहुत ऊपर हो गया है. Yeah. इंशाल्लाह हम सबको इन बातों से हम मुस्तफीद होंगे. आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट इंशाल्लाह. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू. Thank you very much, Madi. Sorry I always go over time with your podcast. Thank you No for man, being here. I love listening to your talks. Okay, thanks.